मैंने अभी को बोला था तू कोई भी लड़की पसंद कर लियो पर उसकी नाक अच्छी होनी चाहिए क्योंकि हमारी फैमिली में सबकी नाक पूरी लंबी लंबी है। Oh, this is very hard to say. And then your mom like introduced me to your grandmother. यूं तो कह देते चुप हो जा कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं। Namaste, I'm Sandy from China. Ni hao, was Avi. You were supposed to say in Hindi, Jan. I am Sandy. How is it in Hindi? Namaste, मैं Sandy हूँ. China से. China से, okay. Yeah, and वो अवी वो इंदुरन। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। In this video, we are going to talk in Hindi and English both, as my parents are going to talk in Hindi. So you can see the subtitles below. Many of you have been asking where is How We Met 3? Because when your parents said about meeting me, that was How We Met 2, we said, okay, in the next video we'll talk about my parents, but my parents are the busiest people in the world. बहुत busy है वो, you know, they're retired लेकिन बहुत busy है. So उनको 5-6 महीने लग गए वीडियो बनाने में, and finally they have sent me the video. I have put it together, John, and I have added the subtitles so you can see. Also, very first time for me to see. Yeah. I've never seen this before. Yeah. Also, you don't know how they felt, right? Yeah, I think they never shared this video. I'm a bit nervous. to Nervous be होगी? honest. अरे नहीं, don't nervous, not get nervous. I don't take bad feedback. Okay. Bad feedback. I'm very bad at taking negative feedback. No negative, maybe a bit. And I will also share कि मैंने अपने Indian parents को कैसे मनाया Chinese wife के लिए, you know, how I convinced them for you. You know, so I think my story, her story, their video. चलो, then let's see what they have to say. सही लग रही हूँ ना मैं? तो वैसे ही सही लगती है वैसे। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ। अच्छा इन्होंने सैंडी के पेरेंट्स ने तो अपनी वीडियो बना दी। अच्छा बना ली क्या? और क्या इन्होंने तो बना दी। अच्छा। आज हम भी अपनी बना देते हैं। अच्छा ठीक है ना? हाँ। ठीक है। तो इसके काफी लाइक मिले इनकी, काफी अच्छी चल रही है वीडियो इनकी। अच्छा। सैंडी के पेरेंट्स की। अच्छी बनाई है क्या? हाँ काफी अच्छी बनाई है। अच्छा। हमारे को उनसे ज्यादा लाइक देना। ये सैंडी के पेरेंट्स यहाँ रहे हैं ना? कल्चर वगैरह के बारे में काफी पता है। हाँ यहाँ के कल्चर के बारे में पता है काफी। हाँ। अच्छा। अब की बार अभी पकड़ा गया। अच्छा। वो गया वहाँ पे, जब चाइना गया था उनसे मिलने, तो वहाँ पे उसने उनके पैर नहीं छुए। हमारी तो रिस्पेक्ट नहीं करी। अच्छा। तो सोचा कि जो पैर छूते हैं इंडियंस वो रिस्पेक्ट है, अदरवाइज तो नमस्ते। ओह मैं अभी आई। गैस बंद करके आपके। तो प्रेशर कुकर। पैर नहीं छुए तो उन्होंने सोचा रिस्पेक्ट नहीं की। हाँ। पर रिस्पेक्ट तो दिल से होती है ना। पर हमारा कल्चर है, उनको पता है हमारा कल्चर है कि भाई हम जब अपने बड़ों के पैर छूते हैं तो कि भाई हमने रिस्पेक्ट करी। आप अभी नहीं भूलेगा इस बात को। इस बार तुम जाते सबसे पहले पैर छुएगा उनके। अच्छा। हाँ। सैंडी के बारे में बताने से पहले मैं अभी के बारे में बताती हूँ कि भाई उसका बचपन में वो कैसा था। अच्छा। कैसी उसकी नेचर थी। तो वो अभी बचपन में काफी होशियार था, बहुत इंटेलिजेंट था और पढ़ाई में बहुत अच्छा था, समझदार था, कभी जिद नहीं करता था किसी चीज की। मतलब जो उसके मन में था वो सादा था बिल्कुल, ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ता था। हाँ अपना आया, अपना काम किया और अपना बस अपना मतलब इस खेल में काफी इंटरेस्ट था उसका। अच्छा खेल में अच्छा उसका इंटरेस्ट होता था। वो जो ऑफिस से आता था या जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन सारे दिन ही कहता था खेलोगे। और इसके जो है एक वो साइकिल थी, उस साइकिल पे बड़ा घूमता था। हाँ, साइकिल पे बड़ा चक्कर उसको एकदम से जैसी तेज चलाता था। बहुत तेज चलाता था। हाँ?
कहता था कि मैं साइकिल पे जाऊंगा स्कूल। हमने कहते नहीं साइकिल पे नहीं जाना, कहते सबके बच्चे आते हैं आप हमें साइकिल पे नहीं जाने देते। ना साइकिल पे नहीं जाना, रिक्शा लगा रखी थी हमने। फिर वहाँ क्रिकेट भी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे तो बड़े चौके छक्के मारता था। खूब अच्छा याद है तेरे को? हाँ याद है मुझे। सारे जने कहते अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी आ जाते थे वहाँ पे, सारे जने खेला करते थे शाम को। हाँ बॉल घर से बाहर चली जाती थी, उठा के लेके आते थे। हाँ खूब एंजॉय किया करता था, काफी गेम में काफी इंटरेस्ट था उसका। चेस भी अच्छी खेलता था, सारे गेम अच्छे खेलता था उसका इंटरेस्ट। फिर हमने सोचा कि खेल में अगर टॉपर हो तो अच्छा है, किसी भी गेम में हो, पर चांस लेना ठीक नहीं समझा। हाँ तो उसको काफी पढ़ाई पे ज्यादा जोर दे, खेल भी खेलना जरूरी है, पर पढ़ाई को प्रेफरेंस दे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है। वो तो है। तो उसने फिर पढ़ाई पर जोर दिया, पढ़ाई पर फिर 10th के बाद उसने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की। IIT की तैयारी की। IIT में कुछ नंबरों से रह गया था पीछे। फिर उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। वो भी काफी अच्छा कॉलेज था, इंडिया का माना हुआ कॉलेज है वो भी। हाँ चंडीगढ़ में एडमिशन हो गया। वहाँ से उसने इंजीनियरिंग की और चंडीगढ़ में उसने काफी अच्छा एंजॉय किया। काफी ट्रॉफी में मिली उसको, काफी मेडल्स मिले और इसको हैंडसम का भी टाइटल मिला था टैग से उसको। तो हाँ काफी। फिर वो 2 साल उसने जॉब करी, फिर वो फिर MBA के लिए वो पेरिस चला गया। देखो वहाँ पे उसकी वो पार्टनर मिलनी थी, उसको लाइफ पार्टनर मिलनी थी, इसलिए वहाँ पे पेरिस चला गया। वो भी पेरिस आ गई। हाँ बिल्कुल, ये इसी को भाग्य कहते हैं। उसकी किस्मत में लिखी थी चाइना की बीवी, तो फिर वो तो वहाँ जाना ही था उसको। उसकी लाइफ पार्टनर तो वहाँ उसका वेट कर रही थी। दोनों ने सेम ही डे वहाँ पे लैंड किया दोनों ने। So yeah, I didn't know that. Oh, what happened? You were crying. क्या हो गया जन? No, just got a bit touched. Yeah, I think they miss the childhood days. I think they are, yeah, उन्हें याद आती है, नो बचपन में थे, खेला करते थे। I think meeting my mother first time. Before I show you this, her thoughts. What were your thoughts? I say first. Okay. You say first. Before meeting her in person, I heard her on the phone first when you were talking to her, and on the phone when you're talking to her, I heard her voice very loud. Very sharp. Yeah, she always shouts on the phone. And very sharp. So I always thought she's having a fight with you. No. And very long sentence. अब हरियाणा में डिस्कशन होता रहता है फोन पे, थोड़ा बहुत we discuss each other. So I always thought, oh, she's a tough woman, like a dragon lady. I was a bit, and also the pictures you showed me, she's all dressed up in very bling sari and with her voice. I thought she's a very tough dragon lady, Indian lady. Okay. So I was very nervous, to be honest. And I remember before meeting her in Paris, because she was supposed to stay with us in our place, the weekend before, I especially went to IKEA to get new towels, new chappals for her, and I was cleaning all my sheets so that I was preparing to give her my bed. So yeah. Okay. And then I remember the night when I picked you guys up in Gare du Nord. Train. We came from Germany to Paris. Yeah. And I especially bought a carnet of dozens of bus tickets for you guys. For bus and metro tickets. So I was fully prepared. And I also bought her gift. Yeah? A welcoming gift. Because in Chinese culture, when you meet the parents, especially the parents of your boyfriend, you give some gifts. So I was thinking... Oh, I didn't give any gift to your parents. No, he didn't.
I bought a perfume for her. Ah, okay. You gave her on the train station? Or? No. Perfume. This is a bit awkward part because I got too much. I got her perfume and I got some toys for my niece. For his Banji. niece. And also got some lipstick for his my sister. Yeah. So I got like a package of gift. Okay. And after you met her, how was it? I remember when I met her, it was on the platform of the train station. I met you first. I was hesitating, should I kiss you or not, because she was right there. So I waited for you to do first. So if you kiss me, then I kiss you back. If you hug me, then I hug you back. Okay. And then you kissed me. Like usual. Usual. So I got a bit shy, and then she was next to you. She looked shorter than I imagined. I imagined her to be a tall dragon lady. Yeah, I'm quite taller than my parents. Yeah. She looks shorter than I expected, and she was so delicate, so fragile. Delicate. So not a dragon lady. No. So I said this, namaste, namaste, and she's also saying namaste, namaste. So I don't have that dragon lady image anymore. Okay. It's right away it's a change of image. And yeah, the moment I met her, all my nervousness and fear went away. It was because nothing was like that. Yeah, I think among my parents, I'm more close to my mom. मैं अपनी मम्मी के ज़्यादा close हूँ. मैंने उन्हें बताया था कि भाई एक लड़की है, उससे पेरिस में मिलाना है आपको. She is Chinese. What are you saying? I'm saying in Hindi, na, for they understand. Yeah, but I don't understand. I told her that it is a girl and she is Chinese, and I will take you to meet her. And she was like, oh. And when did you tell her that? I have never told her anything about any girl, ever. So all my girlfriends before you, in my family, we don't really discuss this with parents. This is something. My one philosophy was why to tell about the girls, because they can be two things. First thing is either they like her, and then you need to marry her. Yeah, then you need to marry her, because if you're not sure and you show her, they're like, oh, this guy found a nice girl and now they are breaking up, or they don't like her, which is worst. So I say until I'm sure that this is the person I really want in my life, I won't tell them. What's the point? And that's why then when we were, I think at that time, dating for 3-4 years. Right, and then I told her, yeah, this is a girl, because I wanted her to meet you, especially as this different culture, and I know after meeting someone, your opinions change about them, as yours changed about my mother, right? So I think it's very important to meet, and that's why I was like, okay, let's just meet, and she was very chill about it, and said, okay, let's meet up. Okay, that was my strategy. So first get my mother on board. So you didn't tell your dad? No, my father didn't know that. My strategy as well. Same. I think my father is more or less would have been okay. He doesn't care. We would be okay. I think if my mother is convinced, I know she will convince my father also. He's like a father. Yeah, थोड़े पापा से डर के रहना पड़ता है. पापा से तुम इतना नहीं होते. I think पापा होते हैं, my mummy होती है. Mummy is more. Mummy. Okay. Chalo, okay, so let's see what she has to say now. Okay. ठीक है? Nervous हो गई? Nervous हो गई? Okay. नहीं. You translated well. No misunderstanding. No, I good translation. फिर हम यूरोप घूमने गए थे, अभी के पास रुके थे। अभी के पास रुके हम गए थे, मैं तो 15 दिन के लिए गया था। मेरी वाइफ की टिकट जो थी वो 1 महीने के लिए थी। बिल्कुल। तो मैं 15 दिन घूम के यूरोप वापस आ गया था। आप वहाँ रह गए थे? हाँ, मैं वहाँ रह गई थी। जो है और मुझे अभी ने और घुमाना है।
बोला आपको पेरिस लेके जाऊंगा मम्मी। मैं कहा चलो जी। मैं कहा मैंने तो देख लिया पेरिस में, हम एक बार पहले भी गए थे यूरोप, जब वो पढ़ रहा था जब वहाँ पे पेरिस में, तब हम एक बार पहले भी गए थे। कहता नहीं आपकी जो शॉपिंग वगैरह रह गई है वो मैं आपकी पूरी करूंगा। ठीक है करा देना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप तो आ गए वहां से, फिर मैं पेरिस गई, ट्रेन से उतरी तो इसने आपके आने के बाद फिर मुझको इसने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे ना मैं आपको पेरिस लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने ना एक लड़की को पसंद किया हुआ है और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा। मैं कहा कोई बात नहीं, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है कोई भी। मैं तो मतलब इन बच्चों को पता ही है, मम्मी माइंड नहीं करती ज्यादा इन सब बातों को। पर जब उसने मुझे बोला कि भाई, मैं कहा हाँ कौन है लड़की, कौन है? कहते मम्मी लड़की तो चाइना से। मैंने तने सारी दुनिया में तने चाइना की छोरी मिली। चलो कहता नहीं मम्मी आप उससे मिलो, अच्छी है लड़की, कोई बात नहीं, आप एक बार मिलो तो सही। मैं चल ठीक है मिल लेती हूँ, ऐसे तो तू समझदार है, तूने देखा ही होगा ठीक लड़की होगी। मैं चल ठीक है मिल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हम गए पेरिस, तो वहाँ पे मैं ट्रेन से उतरी तो मुझे एक प्यारी सी लड़की दौड़ती हुई अभी की तरफ आती हुई दिखाई दी। तो बड़ी अच्छी लगी मुझे, मतलब उसकी आंखों में बड़ा प्यार था अभी के लिए। तो मेरे को ये हुआ, मैं कहा जब दोनों प्यार करते हैं ना तो इनके बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है दोनों की कर देनी चाहिए शादी। इतना प्यार उसकी आंखों में था, ऐसे भागती हुई ऐसे आ रही थी, आ गया तू। तो मैंने कहा फिर मैं उसके साथ रही हफ्ता, हाँ 1 वीक हमने साथ ही स्पेंड किया। और उसका जो फ्लैट दिखा उसने बहुत अच्छी तरह से बहुत रखा हुआ था, बहुत मेंटेन रखा हुआ था। खाने में भी बहुत अच्छी, खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी, अभी को पूरी ध्यान रखती थी अभी का। मैं कहा क्या फर्क है, कुछ फर्क नहीं है, चाइना की लड़की भी इसी तरह से ध्यान रखती है, इंडियन लड़की भी इसी तरह से ध्यान रखती है। मेरे को कुछ बहुत अच्छी लगी मुझे उसकी बातें, उसकी मुझे लगा ही नहीं कि मैं मतलब किसी और कंट्री की लड़की से मैं मिल रही हूँ, मुझे लगा कि ठीक है। तो उसने फिर उसको पता चल गया कि मेरे को पिक्स खिंचवाने का बहुत शौक है, तो उसने मेरी खूब फोटो खींची। उसने मुझे एक ऐप भी बताई। अच्छा, हाँ, फोटो सुंदर बनाने की। आप तो वैसे सुंदर हो। थैंक यू। ये तो आपने कभी भी नहीं कहा मेरे को मैं सुंदर हूँ। कमाल है, आपको याद ही कहा। ना आपने कभी भी नहीं कहा मैं सुंदर हूँ। नहीं, ना आपने कभी भी नहीं कहा। आप सुनते ही नहीं मेरी बात। ना ये आपने कभी भी नहीं कहा। चलो अब तो कह दिया। हाँ चलो थैंक यू इस बात के लिए। नहीं मैंने मान लिया, फ्यूचर में मान लेना, फ्यूचर में मान लूंगी। ऐसे मानना मुश्किल है वैसे। नहीं ना मान लूंगी। तो उसने वीडियो को नहीं ऐसी बात नहीं है। तो उसने मुझे एक ऐप बताई कि भाई इस पे ना फोटो सुंदर बन जाती है। अच्छा ठीक है। और मतलब उसने मुझे फोटोग्राफी करनी सिखाई, इस एंगल से करो तो ऐसे अच्छी लगती है, इस एंगल से करो तो ऐसे बनती है। मैं कहा ठीक है। तो और मेरे को जैसे मुझे शौक था पर्सेस का, तो कहती यहाँ से खरीदो, ल्यूई विटॉन का लो, यहाँ पे फैक्ट्री है पास में पेरिस में, वहां बनाते हैं। तो मतलब हर एक चीज के लिए इंटरेस्ट दिखा रही थी वो। कोट लो आप, जैसे मेरे को जैसे कोट लेने थे तो मुझे शॉप पे, मतलब ये नहीं कि भाई अपना फटाफट एक शॉप पे गई ले ला के पार करो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अब इंटरेस्ट उसको मेरी आदत है, जैसे मैं एक शॉप से जाके खरीदारी नहीं कर सकती जब तक मैं 10-15 जगह ना देख लूं वो चीज, जब तक मैं खरीद नहीं सकती। तो ये मतलब उसके फिर चेंज भी कराना होता है। नहीं चेंज तो वहां नहीं होएगा। ये सिर्फ इंडिया में पॉसिबल है, वहां तो चेंज नहीं होएगा। तो नहीं काफी इंटरेस्ट से अच्छी लगी मुझे वो लड़की। मैंने अभी को बोला था, मैंने कहा अभी तू कोई भी लड़की पसंद कर लियो पर उसकी नाक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली में सबकी नाक पूरी लंबी लंबी है। बोला था। एक बात का ध्यान रखियो, नाक का ध्यान रखना है। तो भाई वो बिल्कुल अपोजिट ले आया कहती है। अच्छा मैंने कहा भी ऐसी बात है, अच्छी है नहीं, बस उसकी जो जैसे उसके सारी चीजों के साथ उसका नाक ठीक लगता है। उसके सारे पिक्चर्स जैसे उसके बॉडी है उसके में वो एडजस्ट हो जाता है। मुझे लगता है उसमें शायद लंबा नाक अच्छा भी ना लगता। बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं लगता। तो पर ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। I remember now. Remember? I remember because our apartment in Paris is quite small, in Paris. अरे क्या जाने कराई होगी?
I get tissue. Last time I didn't bring the tissue. Everybody was saying, yeah, Avi, you should bring tissue. Yeah, I get the tissue this time. अरे जान क्या हो गया? It's, you know, I was really touched. क्या हो गया? I didn't think you will cry this time. I didn't expect it either. अरे shit. Is it fine now? You have been to India many times, right? So what are your thoughts about India, Indian culture and everything? What do you think? Yeah. I've been to India 3 times already before meeting your family in India. Because my parents lived there, so I knew pretty much everything. But when I visited India before, I never stayed with Indians 24 hours in their home and go to places that they go to. You know, I was more like a tourist. Yeah. Long-term tourist. So I was a bit concerned also. Because I learned that I need to stay with your family, and then I was a bit concerned about the food that I'm gonna get. Because previously when I was in India with my parents, because we are a Chinese family, of course we eat in some Indian food from time to time, but mostly we stay at home. My dad cooks Chinese food, and so this time when I imagine I have to eat Indian food, three meals per day for every day. ये बहुत बड़ी भूखड़ है, भूखड़ बहुत बड़ी. And I was like, oh, what if I miss noodle soup? Then nobody will cook noodle soup for me. That was a bit. That was my first concern. Then my only concern actually. Yeah, so I think after the meeting went well, मुझे लगा ठीक है, now I think ये ready है इंडिया ले जाने के लिए, मेरे पापा से मिलने के लिए, मेरी फैमिली से मिलने के लिए, ताकि ये भी देख ले इंडिया कैसा है. As we get married, who knows, we might have to go to India and move to India. You know, she must know what is my background, what is my family, where I come from, so she can also make a informed choice. Because this was not a typical relationship. I wanted to make sure she has seen everything, what my background is, what my basic values are from the family perspective, and then they can also see her. Okay, so let's see what are their thoughts of you visiting. फिर मैं इंडिया आ गई, फिर मैंने आपको बताया. फिर आपको कैसा लगा? अरे मुझे पता लगा कि ये चाइनीज गर्ल है. I was very surprised from China. Then I thought when they are interested, both are interested in each. So मैंने कहा ठीक है. नहीं, कुछ दिन तो आप बड़े परेशान से रहे थे. ना थोड़े से तो नहीं रहे थे. ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ी कोई लोग क्या कहेंगे? ना लोगों का मुझे कोई मतलब नहीं था. ऐसी कोई बात नहीं. अच्छा. तो उनको अपने आप एक दूसरे को पसंद करते हैं. तो ठीक है, ठीक है. गो अहेड. फिर उसके बाद वो यहाँ आगे दिवाली पे भी आए थे. फिर नहीं, आप फिर बोले कि तू अपने पेरेंट्स और बात कर ले. अच्छा. तो मैंने कहा आपके तो पेरेंट्स थे नहीं तब तक, तो मेरे पेरेंट्स ही थे. तो बोले कि मैं गई अपने पेरेंट्स से मिली, मैं रोहतक गई. अच्छा. तो फिर मैंने मम्मी से बात करी. मम्मी को मैंने बताया अभी मेरा बेटा जो है वो मेरी मम्मी का फेवरेट. वो तो अभी जैसा कोई नहीं, सब भी अच्छे लगते हैं मुझे, पर अभी सबसे अच्छा लगे. अभी बहुत अच्छा है, अभी बहुत अच्छा है. तो मैंने कहा अच्छा. तो अभी जब मेरी मम्मी को पता चला कि भी अभी ऐसे ऐसे एक लड़की से प्यार करता है, तो मम्मी बोली कि दिखे छोरे का दिल मत तोड़ दिए, चुपचाप शादी कर दी उसकी. तो जब मम्मी ने हाँ कर दी तो मैं ठीक है. फिर मैंने अपने ब्रदर वगैरह सबसे, जितने रिलेटिव थे सबसे पूछा, सबने बोला कि ठीक है कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फिर हमने उनको इनवाइट करा कि अभी को बोल दिया भाई तू अब की बार दिवाली को उसे अपने साथ ले आइए. तो दिवाली पे साथ लेके आया वो. तो दिवाली पे साथ लेके आया तो काफी यहाँ आई. तो मैंने उसको देखा, हम तब मतलब काफी एडजस्टेबल नेचर की लड़की लगी मुझे, क्योंकि आपने देखा था हमने अभी जब तक फर्नीचर भी नहीं खरीदा था. तो अभी हमने यहाँ पे गुड़गांव में नया फ्लैट लिया था, तो फर्नीचर भी नहीं था हमारे पास तब उस टाइम पे. पर वो तो मतलब उसको ये नहीं लगा कि भाई यहाँ ये मतलब फर्नीचर भी नहीं है, हर एक चीज के लिए ये ऐसा ले लो, आप ऐसा कर लो, आप ऐसे बनवा लो, हर एक चीज में इंटरेस्ट दिखा रही थी.
तो और हम फिर दिवाली पे आई थी, मार्केट गई, तो मार्केट में भी उसने बहुत अप्रिशिएट किया चीज़ों को, यहाँ के कल्चर को बहुत देखा, ध्यान से देखा, सीखा। वैसे तो काफ़ी कुछ जानती भी थी पहले से ही वो, तो पर अच्छा लगा उसको यहाँ पे काफ़ी, मतलब हमारे पूजा करी उसने हमारे साथ दिवाली की, बैठ के पूरी जैसे सिर पे चुन्नी लेके जैसे करते हैं, तो मतलब अच्छा उसने, मतलब ये लगा नहीं मुझे कि भाई मैं किसी और मतलब कंट्री की लड़की के साथ हूँ, अपने त्योहार मना रही हूँ। उसको खाना हमारा बहुत अच्छा लगा। जो भी मतलब खाना बनाती थी मैं तो अप्रिशिएट करती थी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बनाया आपने, मुझे सिखाओ। तो वो उसका सीखती भी थी खाना कैसे बनाए, तो उसको मतलब इंटरेस्ट लेती थी उसने, और वो बनाती है वहाँ पे अब अभी के लिए। एक दिन वो अपना चाइनीज खाना बनाती है, एक दिन वो इंडियन खाना बनाती है, दोनों बनाती है। वेरी गुड, गुड गुड। दोनों खाना खाते हैं वो, एक दिन चाइनीज खाते हैं, एक दिन इंडियन खाते हैं। उसका और उसको हमारा इंडियन खाना बहुत पसंद है। उसको कहती थी मेरे को बहुत टेस्टी लगता है आपका खाना। और वैसे तो इंडियंस लड़कियां कम ही अपनी सास की तारीफ करती हैं, पर वो मेरी भतीजी के पास वो रहती है ना, ट्विंकल रहती है वहाँ पे, उधर क्या नाम है उसका जगह का, नहीं वो जहाँ पे इन्होंने शादी की थी अविनियर सैंडी ने, डेनमार्क के पास गई थी, तो ट्विंकल बता रही थी कि बुआ जी आपकी तो बहुत तारीफ कर रही थी, बहुत बड़ी फैन है आपके खाने की। मैंने कहा अच्छा, कहती आपके खाने की बहुत तारीफ है, कहती मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती है। खाने की तारीफ कौन नहीं करता? अच्छा। आप तो करोगे ना। मैं तो करता ही करता हूँ, जो खाता है वो भी करता है। अरे आप इस उम्र में करोगे ही, आपको जब कौन खाना देगा? पहले मेरे पास टाइम नहीं था तारीफ करने का। तो वो भी, उसको मेरा खाना बहुत अच्छा लगा। और नहीं, वो भी अच्छा बनाती है खाना। वो यहाँ इंडिया आई थी तो इसने बोला कि आज मैं डिनर मैं बनाऊंगी। अच्छा, तो उस दिन आपने खाया था कितना अच्छा बनाया था उसने खाना, बहुत टेस्टी खाना बनाया था। और उसका सबसे अच्छा तरीका तो सर्व करने का, मतलब आदमी को इतना अच्छा तरह से टेबल लगाती है ना कि आदमी का वैसे ही खाने को मन कर जाता है। बिल्कुल बहुत टेस्टी खाना बनाया था उसने। तो मेरे को लगा था पता नहीं एडजस्ट होगी नहीं होगी, पर मुझे तो लगा कि वो ज्यादा एडजस्टेबल है। बिल्कुल अपने आप को हर माहौल में एडजस्ट कर लेती है वो। तो वही है कि घरेलू है बिल्कुल, जैसे हमारी यहाँ पे इंडियंस लड़कियां होती है। बल्कि मैं तो ये देखती हूँ यहाँ की लड़कियां खाना नहीं बनाती बिल्कुल भी, वो सारा काम करती है खुद, अपने आप सारा खाना बनाती है प्रॉपर, और डेकोरेट इतना अच्छी तरीके से करके देती है खाना कि आदमी का भूखा ना भी हो तब भी उसको भूख लगाए। तो शी इज वेरी गुड, परफेक्ट। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी उसकी। तो पर मेरी ये बिल्कुल विचार बिल्कुल बदल गए हैं कि भाई इंडियंस लड़कियां ही मतलब जो ज्यादा ध्यान रखती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब वो भी उनका भी है ऐसा कल्चर, हमारे जैसा ही कल्चर है। यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, वो भी पीस चाहते हैं, आपस में मिलके रहना चाहते हैं, वही उनका कल्चर है, वो भी ऐसे ही चाहते हैं। हाँ, सभी लोग शांति चाहते हैं, जो आम लोग हैं इंडिया के हो चाहे चाइना के हो, हाँ सभी शांति चाहते हैं, बिल्कुल शांति चाहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं। हाँ, सब ये सब लड़ाइयाँ झगड़ा किसी को नहीं पसंद है। I don't know why I'm a bit emotional these days. Emotional हो गई जन, क्या हो गया? You praising her really helped her because I think my mother has been cooking food for us for I don't know forever, but I think in Indian culture we never say like thank you. Thank you to your mom. You don't say that, right? But you came in and she was saying thank you to her in everything. Whatever she did, and maybe she was like, oh, okay, this woman is like, yeah, mother needs to be acknowledged. Yeah, I think हमें भी ये देखना चाहिए, हमें करना चाहिए। I think हम मम्मी को ना वो ले लेते हैं as a given that yeah, of course she will cook for us. Yeah, I mean, take her for granted. Yeah, take her for granted. अच्छा नहीं बनाया खाना, ये नहीं करा, वो नहीं करा. I think we should really appreciate all the effort mother does for us. It's really amazing how much sacrifice a woman can make for their children. Okay, and then what about meeting the dad? Yes,
I remember when we landed in Delhi, only your mom was there at the airport because your dad was at work. So we went home and I took a shower. And I took a shower, and when I came out of the shower, I was like no makeup, hair wet, and wearing my pajama. And then your father came back home. He was already sitting in the living room. And then and then I just went and I said, "Namaste, sir," and I shook his hand. You shook his hand like hello. Okay. Okay. What about the impressions of him? My impression of him is like he's a very calm yogi person. Yogi person, okay. I didn't have any fear of him. Okay. He looked quite peaceful, yogi type of person. Let's see what his thoughts are about you. Okay. When I met for the first time, she looked to me very pretty. Oh! She is very pretty. Yes, she is very pretty. और उसके बाद जैसे वो हमारे पास साथ रही, so उसमें और भी जो है उसके बारे में पता चला तो बड़ी घरेलू लड़की है. हाँ, बिल्कुल. बहुत अच्छी लड़की है. हाँ, अच्छी डॉल सी है बिल्कुल ही ना. अच्छी लगी बहुत ज़्यादा. Yeah. So my father doesn't express too much. Yeah, I think he said this much. It means a lot. मेरी मम्मी ज़्यादा बोलती है. I think my father doesn't speak so much. So I think he said this much. It's enough. Yeah, it's more than enough. Highly appreciated. Yeah, highly appreciated. And then you met my family, right? So what are your thoughts about them? What do you think the family? I remember it's Diwali time, and I met all your aunts first. Aunts yes. with the girls' niece. Mommy. Yeah, and they were like your youngest aunt, is it? Youngest aunt, yeah. Yeah, she. Choti mommy. Yeah, and with her girls, and they were like, as if I am a famous celebrity or something. And they were they went in a room. They were full of praises to me, and then the girls were like, "Can I have your Instagram? Can I follow you?" They were very excited to talk to me, and I felt immediately very welcomed, and I felt very nice. And then I remember they brought me after the dinner. No, in the evening. Then we went to the grandparents' house, the big house, where there were more family members, and I met everyone. I met your grandfather. Yeah, my Nanaji se mile the hum. I remember when you came in, because my Nanaji ko pata tha ki I am in Germany, and when he saw her, he was like, "She is not German." He was he was more than 90 years old. I mean, in his prime time, he was like a really strong man and very huge. But I think when you are about 90, you become I think it like a bit like a child. And he was like, "Oh, she's not German." I can tell. I know German women. But she's a fake. Yeah, but he was nice, and I think he was giving you Ashirwad, and I think. Yeah. I had what is it called, the sweet, the. Kheer. Kheer. For everyone, give me kheer they made. I had different kheer from everyone. Yeah. And then I met. This is very hard to say. Because that was meeting the grandfather, and your grandmother was already passed away at that time. Yeah. But there was a picture of her putting in the family, big picture, and then your mom told me,
this is my mother. I said, okay. And then and then your mom like introduced me to your grandmother, and I did namaste to her pictures as if she was there, and then your mom take a picture of of me doing that also, like I was actually meeting her. I was very touched at that moment, because I thought I was really accepted by her and by your family. Yep. Okay. Yeah. So let's see what my mom has to say of you meeting the family. Yeah. Yeah. I think my nani ma. Yeah. Okay. Yeah. Let's see. तो फिर हमारी फैमिली से फिर हम रोहतक गए उसको लेके। हाँ जी। रोहतक गए तो वहाँ पे भी सबसे पापा से भी मिली। जब मेरी मम्मी तो थी नहीं उस टाइम पे, मम्मी तो चली गई थी। हाँ जी। मम्मी को बहुत था अभी की शादी का। अच्छा। मेरी तो वो कहती थी कि मैं एक बस अभी की शादी देखनी रहेगी बस। अच्छा। उसको मम्मी को बहुत करती थी मम्मी उसको, अभी को ना, अभी की शादी का बहुत था मम्मी को कि अभी की शादी हो जाए मेरे आगे। पर मैंने फोटो तो दिखा दी थी मम्मी को, जब पेरिस से आए थे ना हम, तब दिखा दी थी मम्मी को फोटो। कहती बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, दिखे, इन दोनों की शादी करा देना। मैंने कहा हाँ मम्मी, मैं कोई दिक्कत नहीं है, करा दूंगी इनकी शादी। यूं तो कह देते चुप हो जा, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं। पर मेरे पापा से मिली, पापा को भी बहुत अच्छी लगी मेरे। तो सबने बोला ओको कर दिया, सबने कहते हैं भाई सब बढ़िया छोरी है, ठीक है, अपना कर करा के पार करो दोनों। जब दोनों राजी, मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी। तो सब कुछ मुझे ठीक लगा। मैं तो यही कह सकती हूँ कि भाई मैं अगर अभी के लिए ढूंढती तो मैं भी शायद इतनी अच्छी लड़की ना ढूंढ पाती अभी के लिए। बहुत मतलब बिल्कुल परफेक्ट, जो मतलब जिसको कहते हैं परफेक्ट मैच, मेड फॉर ईच अदर। अब तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि दोनों खुश रहें, अपना इसी तरह से अपने वीडियो बनाते रहें, दोनों अपना कुछ छोटे मोटा जो है अपनी लाइफ में अपना इसी तरह से प्रोग्रेस करें। भगवान उन दोनों को ऐसे तरक्की दे उनको, और ऐसी खुशियां उनके जीवन में आती रहें, बस यही प्रार्थना करते हैं हमसे। यही प्रार्थना है, दोनों खुश रहें। हाँ। So, this is what you expected, or? No, I didn't expect this. No, I didn't expect this. You thought they will be? I don't know. Okay. And one last question. So, who do I look like more, my mother or my father? Let me show you their young photos. Okay. Let me show you the young photos. So, is this a question for me or for the audience? For you, or for you also. Because this especially my mother said, okay. मम्मी कह रही थी कि हमने बुढ़ापे में दिखा रहा है तुम्हारी शक्ल, तो जवानी की भी फोटो दिखाई हो, लोग ऑडियंस को, कि हम कैसे दिखते थे, कितनी सुंदर थी मैं जवानी में, she was like how beautiful I was. So this is how they look like. Because my parents had their session. Yeah. They wanted to show their photos also. Okay, show them then. Okay. I think you look like your father. Your nose is on your mother's. My nose, okay. Face cut, eyes, mouth is on your dad's side. Okay. Even your, how can I say, the gesture when you, the pose when you sit, when you walk is on your dad's side. The personality you mean? Or no, when you just... demeanor. Okay, the way I... okay.
Oh, you tell guys. Who do I? What do you think? I think my eyes are on my dad, and my face cut is more on my mom. Ah. Yeah, because I have a sharp. Your dad is more like this. Huh? Oh, your mom also. Mom has more. I would say. Yeah. Didn't you see their photos? Ah, yeah. Yeah. But yeah, I think my face cut is one. But I don't know. Everybody has their own thoughts. You'd say, guys. So yeah. So this was how we met three, and my Indian parents. In the end, guys, you know, people have a lot of misconceptions and stereotypes. That's why my strategy was always to let them meet each other, and then they will see the good sides. Not make decisions based on Chinese तो ऐसे होते हैं, Indians ऐसे होते हैं, क्योंकि उन्हें कितने Chinese से आप मिले हो, जो वीडियोस देख रहे हैं आप कितने Chinese से मिले हो, कितने Chinese से आप लोगों ने बैठ के बात करी है, लंच किया है, साथ रहे हो कि आप ओपिनियन बना सको चाइनीज़ कैसे होते हैं. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी कंट्री किसी भी बंदे के बारे में ओपिनियन बनाने से पहले आई थिंक उससे मिलिए, उसके जानिए, ओपन माइंड रखिए, एंड बी ओपन माइंडेड एंड देन मेक ओपिनियंस अबाउट अदर पीपल. एंड एवरीबडी इज़ डिफरेंट. From China, everybody is different. From India, everybody is different. It doesn't mean that Chinese are like this, Indians are like that. It's really not true. Yeah, it's okay. I think it was a long video, but very important. I told the Indian parents' story and my side of the story of how I convinced. I need to show this video to my parents. You want to show? Okay. I think they are also curious to see how Indian parents think of me. Hanji. Okay guys, thank you very much for watching. Then, ciao chien, ciao, chai chien, namaste, chai chien.